हेलो हेलो। आर वी लाइव? बहुत गंदा नेटवर्क दिखा रहे हैं तो लेट मी चेक। आवाज़ क्यों नहीं आ रही है इसमें? ठीक है, सही। इट इज़ गुड। I do not stream for last 2-3 days, I guess, and the reason was I was traveling. Okay. Yes, 4 days ago. Okay, no problem. It, but I did solve the questions though. Like, I didn't take break from solving or studying. Just I was not streaming. Okay. The timings were very strange, like very late night. So that's why I thought of not streaming. Let's start. So what will be the target for us today? First, we will be solving the longest increasing subsequence, this one. I have done this like by recursion and memoization, but now the tabulation is left. Okay. Tabulation. Okay. So for tabulation, let us take this GP. Okay. And then assign it by cart. How did it come? We will be assigning it with the 0. Let me comment this first, not both, just this. Okay. So after this, how it will run? So the base case for it is like I is equals to 0 0. So if it is smaller than, fine, I understood. Wait, let me show it. So if I am having a like array with 1 5 2 and 3. Okay, so here what are we going to do? 0 1 2 3, and the other side would be like 0 1 2 3 4. Okay, 0 1 2 3, 4 एलिमेंट है, 4 तक किया हमने. Okay, so the 0th element, if it is smaller than this, the 0 comma 0 would be 0 for sure. Okay, this 0 will be treated as this 0. I guess this should be the 0 now. 0 1 2 3, this is considered, but this won't be considered. H. Okay, if I am considering like this is 0 1 2 3
for this side also. Then what do I want is it smaller than the 0 comma 0 of it? No, these both are 1. And what about 1? Yes, it is smaller, so I can give it 1. Is it smaller than this? Yes, yes. And what about 4? There is nothing on the 4th. Like this is the extra. Okay. मैंने बंद करा था, मम्मी ने बंद करा था। मैंने तूने? Why? फैन मैंने स्ट्रीम चल रही है। हाँ कपड़े ले ले ले। हाय गाइस, क्या? कल तेरे दोस्त सीटी चलेंगे मेरे साथ? मेरे दोस्त मतलब तेरे कितने दोस्त हैं? 100। बोल। पूछ ले, मुझे नहीं पूछ। पता है। पूछ। मतलब वही उठा सकते हैं तो हमें हैं? वही उठा सकते हैं जब कोई दूसरे यहाँ से प्रेशर आए। मतलब उठ नहीं पाते ना हम। हाँ, इसलिए ही बोला, हाँ इसलिए हाँ, बोला वही क्योंकि कह रहा खुद हूँ। तो निकला नहीं जा रहा। थोड़ा रील का कंटेंट निकाल के आएंगे। मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ बंद कर दे। क्या है बहुत अब? गीला है, मैंने अभी पंखा चलाया, थोड़ी देर बाद बंद करियो। ओके, we are back, let's start again. Okay. hmm so like what are we targeting is that currently if I am at one element, if I am currently at 0 comma 0, okay, if I am currently at 0 comma 0, then what I am asking is that till now how much longest increasing subsequence I have got. Okay, so till here there is nothing, till here there is nothing,
till here there is one, till here there is one. Okay. mm, hmm. Hmm. If my previous is this 1 and I am currently at 1, then there is nothing. If my previous is 0, 1 and my current is 5. Okay. If my current is 5, at first the previous would be nothing now. If I am at 0 and my previous is nothing, so that would be denoted by 0, I guess. Am I right? Currently I am at 0, 0 and my previous is like this is my previous, and if my previous is 0, if my previous is nothing, if my previous is nothing, okay, this is my prayer and this is my I. Okay. This is my previous index. Okay. So at first, like I haven't picked up anything previously. Okay. This will denote that only. Okay. My previous is nothing and I am picking one. Okay. So there is one. There is nothing as my previous. This would also be one. This would. There was no previous index, like we haven't picked anything else. Okay. And here what does it say? If my previous index was 1, previously picked was this, I will be subtracting 1 minus from it. Previously picked was this, but how does it make sense? Wait. Previous index is equals to null dot size. Wait. We will be starting from the 0. Okay. 0 and here I am having -1. Okay. Int less int I comma vector int and nums comma int prev. Okay. Int prev. Okay. So one choice would be like int c1 will be equals
to like choice 1 is what, like I would be picking it. Okay, I will not be picking it, not pick. Okay, let's I minus 1, we can write it like that so it would be clear. Once we haven't picked anything, so prev would remain same. Okay, next up what we have, if our, we can pick when can we pick, if that element, if the correct element nums of i nums of i जो है वो बड़ा है prev से. Okay, then we can pick it. Or if we haven't picked anything till now, if prev is equals to prev is equals to है -1. ओके, या तो ऐसा हो. ठीक है, तो हम रिटर्न नहीं करवाएंगे. सो C2 ले लेते हैं एक. int C2 is equals to int max. Okay, now if I am trying to pick it, okay, so I would be assigning it like pick that element. Okay, this call is wrong. Okay, now fine. If this is my call, then what I will be calling is go to the next. Okay, remain here and pass this element as my previous. We have to pass the previous index now. Okay, previous index is being passed. Now what we will do, return the max of c1 comma c2. Okay, c1 comma c2, c1 comma c2. Okay, and at last the base case would be if I is equals to non-stop size, then what we will be having as return 0 because we cannot pick anything there. Okay, this should work, I guess. Yes. -1 C2 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 C2. एक सेकेंड, ये बकैती कर दी. ये मैक्स कैसे दे सकता है ला के? हाउ? I+1 जा रहा हूँ ना. I+1 नम्स I I I. क्या बातें हैं. It is still same. Okay, when I reached 0. Okay, so it was -1. Okay, either I cannot pick it. Okay, so I would be moving to the next and my prev would remain same, -1. 0 would be added to it if my prev is equal to
प्राइवेट इज टू -1. ओके, सो या तो हमारा प्रीवियस जो इंडेक्स हमने चूज़ करा है तो -1 होना चाहिए. अब तक हमने कुछ चूज़ ही नहीं करा तो वी कैन obviously choose it. Okay, or what we can do is or what we can do is if it is -1, like we haven't choose anything, or if the current element. Okay, okay, अरे भाई, okay. So this can be like memoized very normally. Vector, vector int, vector int, vector int dp n comma vector int m comma -1. m कहाँ से आ गया भाई साहब? n+1, because we need it till the n. Okay, here you will be passing the dp, here you will be passing the dp, here you will be passing the dp, and here also. Vector int and dp. Okay, now if I have to like tabulate it. Okay, now for tabulation I'm gonna pick this normally. Okay, and now what do I want is like add the, if I is equals to nums dot size. Okay, so my last column like I is like this now. So my this like this column, this last column should be what? Should be assigned as 0. So I don't have to do it explicitly because my whole matrix is assigned to be 0. Okay, so here what are my columns? Okay, so these are my these are my I, and these are my previously index chosen. Okay, so if this is like this and this 4, what about this 4? Like these are 0, so if I am reaching here I am at 0. Okay, now what will be the loop for it? For int I is equals to what we will be choosing, n-1 to start. Really, you are saying what row will you choose? Okay, so should be like I am going for, it should be like solved. First solve this, then this, then this, then this, and then this. Okay, what from where should I start my tabulation loop? So if I am currently at n-1 row, n-1 row, n is 4. Okay, so n-1 would be 3, so I am currently here. Okay, and what am I supposed to solve? Like this, I will be finding this. Okay, so my this should be n-1. Okay, and this should be, I should be greater than or equal to 0. Okay, and this would be subtracted. Okay, the row should get one by one decreased.
and column should be my column should be this. Okay, this should also be n minus 1. Okay, I should be I j j should be n minus 1. Okay. Okay, and j should also be equals to or greater than 0. Okay, and j should be subtracted one by one. Okay, and now the main body, either we can pick it or we don't pick it. Okay, okay. So it would work like, there we were checking whether it is greater or smaller. So here, there we were checking whether it is greater. Okay, so here we will be checking is it smaller. Okay, so like if I am moving from right to left, I would be checking whether it is smaller or not from the previous chosen one. Okay, it would be working like this. Fine. So how would it go? Let's first not pick, and one should be the pick. Okay, so if I am not picking it, int c1 should be equals to mm, hi, hello, welcome to the stream, Ayush bhai. How you doing? Okay, so currently, if I am not picking, okay, I am currently at this position. Okay, 3 comma 3. What am I am doing good, man. Nice. uh, what do we need is dp. So I am not like picking the element, just write it for the clarity. uh, what I will choose the, if I am not picking it, so what do we need, which element do we need? Okay, uh, mm, from dp table I would be requiring this value. Okay, fine, we need this value. If I am currently here, I need this one value. So it should be the column should remain, the row should remain same, and it should be, the column should be one ahead. Okay, if it is a not pick. All right. mm we have n rows. Okay, and n plus 1. और बताओ आयुष भाई, क्या कर रहे हो आप? डीपी कर लिया आपने? I have n rows and n plus 1 column. Okay, थोड़ा बहुत ही आता है. नाइस. मैंने भी वैसे मतलब मिडल पे ही हूँ अभी. ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वाला एक सेट है उस पे. इसका मेमोराइजेशन और वो तो हो गया. आप कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, मैं तो सही चल रहा है. मेमोराइजेशन और रिकर्शन तो लिख लिया था, टेबुलेशन में थोड़ा अटका हूँ अभी. I am having n rows and n plus 1 columns. Okay, so this will be going till n plus 1 now. So
Mm, 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 mm. I guess I should be having n plus 1 rows and n plus 1 n columns. Okay, so if I have to be like this 1 2 5 3, okay, भाई बड़ा भयंकर माउस है. 0 1 2 3 1 2 3. और बताओ आप कौन से ईयर वियर में हो, कौन से कॉलेज से हो? So currently I will be starting from here, and this whole row will be assigned as VIT will or final year. Nice. So आपने तो सही, ये आपकी लीड कोड आईडी है आयुष 790. वैसे तो मैंने आज तक वैसे किसी सर्च भी नहीं करी, मुझे पता नहीं है किधर होती है. वेट, इधर से होता है क्या सर्च? ये की कर रखे हैं मैंने, ये भी पता नहीं कोई टॉप वॉप का था. हाँ, यूज़र्स. ओके, थोड़ा बताओगे कहाँ पे है? आयुष यही लिखा है ना? सही लिखा है ना? हाँ. आपको दिखे तो थोड़ा बताना, ठीक है, किस तरफ है. टॉप वाली है, अच्छा यही है. अच्छा हाँ, ये रहा, ठीक है. अरे क्रेजी भाई, ये क्या है? थोड़ा बहुत तो बता रहे हो आप डीपी, थोड़ा बहुत, इतने में थोड़ा बहुत होता है? डैम, ये किसका बैज है भाई? इतना कैसे भर देते हो? डैम. नाइट. थोड़ा बहुत डीपी आता है, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? ये कहो. अरे अरे, रियली इंस्पायर्ड बाय यू भाई, कुछ भी. मेरे तो अभी क्या 188. नाइस नाइस, नाइस टू मीट यू. कॉन्टेस्ट रेटिंग क्लोज ही है. ठीक है. कल दूंगा वैसे, मैं भी अभी स्टार्ट ही करा है मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह. वॉचिंग इज ऑल गिव मी मोटिवेट. ओ माय गॉड, यहाँ से मोटिवेशन दी मैंने जैन से. सही है, बढ़िया है ये तो. आप भी सी प्लस प्लस नहीं करते हो? सही है. और क्या क्या है यहाँ? इतनी भयंकर प्रोफाइल तो पहली बार देखी है मैंने. मतलब सर्च ही वैसे मैंने पहली बार करी है ऐसे किसी की प्रोफाइल. ये नाइट का कैसे क्या सीन रहता है, ऐसे बताओगे आप? अच्छा, से बढ़ती गई. ओके, करूँगा, मैं भी कर लूँगा ऐसी. एक साल लगेगा. करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे. कॉन्टेस्ट में लगभग, ओके, 18,550 प्लस रेटिंग. ओके, नाइस. 16 वेजिस. डैम. और क्या करते हो, लाइक आप फ्रंट एंड या बैक एंड, किस टाइप से? एआई, व्हाट डू यू डू अदर देन दिस? नाइट वेज मिलता है. ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग. ये तो मैं छुपा ही देता हूँ अभी, है ना? डेवलपमेंट मत पूछो, कुछ नहीं आता. हाँ, अभी अभी डीपी भी नहीं आता था ना. अभी वैसे मैंने बैकएंड स्टार्ट करा है साइड बाय साइड. लेट्स सी
खाली क्लोन वेबसाइट्स और हैकाथन प्रोजेक्ट्स हैं रिज्यूमे में। नाइस, सही है। बाकी भाई मज़ा आ गया प्रोफाइल देख के, और मोटिवेशन दे दी आपने। मैं थर्ड ईयर में हूँ भाई। नोएडा, नोएडा में कॉलेज है, IILM। पता नहीं होगा बट हाँ उधर से हूँ। तो अभी तो लीड कोड ग्राइंड हो रहा है यहाँ। अभी DP हो जाए पहले तो, और साथ में बैकएंड स्टार्ट कर रखा है, हो जाए तो अच्छे से सही है। आप आ गए वैसे स्ट्रीम पे भाई, धन्य हो गए। ऐसे ऐसे लोग आ जाएं स्ट्रीम पे, कहाँ गए, गलत खोल दिया वो भी। हमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसे ऐसे ना बुली मत किया करो ऐसे। आप आके, थोड़ा बहुत ही आता अच्छी बात नहीं है ये। आज रात भी कॉन्टेस्ट है, बाई वीकली है क्या, कौन सा है, किस टाइप का है, या फिर कोड फोर्सेस का है, कौन सा है कॉन्टेस्ट, कौन सा है? यही है क्या? यही है ना आई गेस, हाँ 17। लो रजिस्टर कर देते हैं। मेरे को लगा बाई वीकली भी कभी सुबह होता होगा। ये सुबह वाले अटेंड करना भाई बहुत मुश्किल होता है। एक ही करा है मैंने अभी तक, जो उस दिन भी करा था मैंने, उसके बाद कुछ फैमिली में मतलब ऐसे हो गया था कुछ, लाइक सुबह सुबह, तो मैं एक क्वेश्चन छोड़ के फिर चला गया था। मनूस हो गया था वो कॉन्टेस्ट। ठीक है आज दे देंगे ये, और कल सुबह ये भी दे देंगे, इसके लिए तो कर रखा है ना। घर में हो या हॉस्टल में? अभी तो मैं घर में हूँ। वैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अभी जाऊँगा, वैसे मैं मंडे को जाऊँगा। लास्ट 2-3 दिन से मैं इधर उधर ट्रैवल ही कर रहा था, लाइक कॉलेज जा रहा था और आ जा रहा था, तो इसलिए स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा था मैं। अगर ये हमारा छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे? ये क्या कर रखा है? आप हॉस्टल में रहते हो या फिर ऐसी, लाइक क्या बोलते हैं उसे, स्कॉलर्स? एक्चुअल में कहाँ से हो आप? पुणे में है ना शायद VIT। पुणे में आई गेस। हॉस्टलर फाइन फिलहाल छुट्टी है। नाइस। भाई पैनिक कर दिया यार आपने प्रोफाइल दिखा के। तमिलनाडु में VIT तो अच्छा ठीक है। नहीं पता मुझे ऐसे। वो कौन सा, एक पुणे में भी है, नाम भूल जाता हूँ उसका। वी कुछ सी है पता नहीं। मैं उत्तराखंड का हूँ। ओ नाइस, क्रेजी यार। वहाँ तो और ज़्यादा ठंड हो रखी होगी। और क्या चाहिए था यहाँ पे? इफ नाम सर्व, हाँ वी विल बी एडिंग 1 to 8। ओके, इसे हटा ही देते हैं। मैं दो कंबल के अंदर बैठ के नाइस नाइस। यहाँ तो हमें मैक्स लेना है ना। आज धूप भी नहीं भाई, धूप तो निकलना मुश्किल ही हो रखा है यहाँ दिल्ली में भी। और नोएडा गया था मैं, वहाँ पे भी भाई बिल्कुल अंधेरा टाइप हो रखा था।
इसे बाहर ले लेते हैं। वैसे आप आज पहली बार ही आए हो क्या स्ट्रीम पे? बट पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आए हुए हो, आप बात ऐसे कर रहे हो। हम्म, हाँ, आए हुए हो आप। बताओ यार, इतने से मैं भूल गया मैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो, ओके ओके। मतलब रिकमेंड तो हो रही है स्ट्रीम, सही है। इसका ड्राई रन करके देखना पड़ेगा, आपके सामने करना पड़ेगा सब कुछ। कर लेंगे चलो। कौन सा एग्जांपल ले, ये वाला ले लेते हैं। 0 0 1 0 3 2 3 2 आई गेस सही है। और बताओ आप, और कुछ टिप्स वगैरह दे दो। आप करते हो ऐसे स्ट्रीम वगैरह लाइक कुछ? 0 3 2 3 पीछे 0 1 2। स्ट्रीम नहीं करता यार, करो आप ही करो, आऊँगा मैं। आप ही ज़्यादा इंस्पायर कर दोगे, आप ही करो। मैं तो ऐसे ही लाइक, मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए कर लेता हूँ, लाइक फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक अगर बैठे हैं तो कर ही लो, या कुछ कर ही रहे हो तो। इससे थोड़ा वैसे प्रेशर सा भी रहता है मुझे, इंटर्नशिप चालू होगी 26 दिन से हो। नाइस नाइस, बढ़िया है। कर रहा हूँ मैं अभी उसके लिए। इसलिए बैकएंड स्टार्ट करा है मैंने अभी, कि थोड़े बहुत सही प्रोजेक्ट बना लूँ, इसलिए स्टार्ट करी मैंने। 0 1 2। नहीं नहीं, तो प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास। 0 1 2 3 4 5 6। ओके, so this row should be my 0. At first I will be calculating here, so so fifth element, fifth and fifth index. Okay, so is 3 smaller than if I won't pick? I'm saying that I'm not picking 3. Okay, मेरी तो खाली डीएससी से लग गई, बट मेरे बैच में ज़्यादातर तर बच्चे इतने लक्की नहीं थे। ओह, लाइक क्या पोजीशन क्या है, मतलब फिर वैसे आपकी तो लगनी चाहिए यार। वैसे लकी थोड़ी हुए भाई, तुम बाकियों का डीएसए फिर इतना स्ट्रांग नहीं होगा ना। लकी थोड़ी बोलते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप। And this is also not smaller, so we will be having only 0. Okay, here it is. ठीक है। If this is not smaller, these both are equal, so we will be calculating only c1 n1. So okay, this would be assigned as 0. ठीक है, then where we will move, we will be moving to the here. Okay, so here what are we checking, that whether my nums of I is it should be equal.
lesser than nums of I is less than of j. Okay, so this is my next element and this is my current element. So if like I am at 7 and this is my 18 is my next element and 7 is my current element, so if it is smaller then I will add 1 to it. Okay. mm-hmm. Fine. So this is like my current element and this is my next element. So if my next element is, but next element यार पीछे कैसे should I be checking like this? I should be filling it like this. Hmm. Mm-hmm. Mm. Okay, this should be my column. I should calculate column first and then row. This looks more promising. Mm-hmm. ट्राई करते हैं. n-1 I should be greater than की क्या है, इसे हम अपना कॉलम मान लेते हैं और इसे हम अपना रो मान लेते हैं. ठीक है, this is my row and I will be calculating it first, then this and then this. Okay. Fine. Yes, this is my row and this is my column. ठीक है. So column फर्स्ट ये वाला करते हैं पहले. dp 1 plus dp of I plus 1j. ठीक है. So I am moving like this. अरे भाई, I am moving like this. So if I have to solve this one now. Okay, 4 of 5. So currently I am at my third element. I am currently here and the last I picked is this. So if this is smaller than it, then add 1 to it and get the value from there. Okay. This is ऐसा ही कुछ है ना, कि अभी मैं अगर यहाँ पर हूँ और मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है तो मैं उस वाले को पिक करूँ अगर वो ठीक है. इफ नम्स ऑफ आई, सो मुझे क्या चाहिए कि मेरा कौन सा एलिमेंट छोटा होना चाहिए, जो मेरा रो वाला है. ओके, सो दिस शुड बी स्मॉलर देन माय नेक्स्ट एलिमेंट. ओके, सो आई इज माय दिस, wait, I is my column and j is my row. Okay, so if my nums of j is smaller than nums of I, okay, if nums of j is smaller than nums of I, then I will be storing 1 from it and the next value I have to pick from where. Okay, so this is like fourth. I am currently at fourth. This is 4, 4. I will be picking the value from the next row. Okay, next row would be taken by j plus 1 and this column should remain same. Okay, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. 1 1 plus
next row. Okay, next row and uh, I जे को i-1 से 0 तक चलाना चाहिए ना, एज इट रिप्रेजेंट्स प्रीवियस। जे को i-1 से 0 तक चलाना चाहिए, जे को i-1 से लेके 0 तक, लाइक ओके यू आर सीइंग हियर। इसे ना वो करने में, लाइक क्या कहते हैं उसे, इमेजिन करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। मेमोराइजेशन वाला तो लाइक नॉर्मली हो गया था, मेमोराइजेशन से सॉल्व कराई मैंने। अगर मैं इसे लाइक इधर वाले अप्रोच से लेके चलूँ, फ्रॉम दिस साइड, ये तो मैंने सही असाइन कर रखी है आई गेस। लुक एट रिसेंट सबमिशन, मेरा है ना, कहाँ गया? ये तो कर रखा है मैंने, ठीक है वो तो। अच्छा आपके, एक सेकेंड, वेट, योर्स रिसेंट सबमिशन, डीपी ऑफ n,1 डी, ये तो वो हो गया बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं इसे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो अभी पहले मैं 2D एरे से तो कर लूँ। ये तो ऑप्टिमाइज लग रहा है मेरे को, मोस्ट ऑप्टिमल, जो लाइक एन लॉग एन वाला अप्रोच है जो फॉलो अप में मांग रहे हैं शायद। डी पी n,1, ये साइंड एवरीथिंग एज 1, ओके। I is equals to 0, I must be less than n, we are moving from, yes, from this side, okay, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, yeah, okay, I should be, it's n square, it won't in, ठीक है, आई तक जा रहा है, ठीक है। if फॉर एलिमेंट वी आर चेकिंग, उसके पीछे कोई उससे छोटा एलिमेंट है क्या? ओके ओके, फॉर एवरी आई वी आर चेकिंग, ओके अंडरस्टूड, ठीक है। इफ आई एम करेंटली एट आई विल बी, if I am here I will be running a loop of j from previous, and we will check how many smaller than 8, okay fine, so we are actually storing the count there, understood, okay 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 fine, and we will be updating the row by row it, okay, because we need the only previous row for the next answer, right? समझा।
ये वाला समझ तो गया मैं, like we have to if I am at I then I will be checking all elements which which are previous than it, and we will count how many are smaller than it, and we will like store them in our current DP array. ये तो समझ गए, ठीक है। बट इसको कैसे ले जाया जाए? एक बार ये 2D वाला भी तो आए समझ, इसको इधर से लेके चलते हैं। वेट, कहाँ गया? हम्म, आपका ख्याल तो समझ आ गया मेरे को, ठीक है। वो 1D ऑप्टिमाइज्ड है वो। एक बार हम इसे इधर से स्टार्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम 0,0, ठीक है। previous element one would be my I should I should be my, ठीक है। so my this should be like here or here। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो एक्सीड करेगा, या फिर इन स्टार्टिंग ऐसा होगा कि जब उसका कोई प्रीवियस एलिमेंट पिक्ड ही नहीं होगा। ठीक है। for int is equals to कैसे लिखना है, is equals to 0 must be less than नहीं, वेट। so अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं अभी इस साइड हूँ, ओके। सो करंटली आई हैवेंट पिक्ड एनीथिंग, दिस इज माय प्रीवियसली पिक्ड एलिमेंट, ठीक है। दिस इज माय प्रीवियसली पिक्ड एलिमेंट एंड this is my current, okay। so if I haven't picked anything till now, j is equals to 0, so we can obviously pick any of them, है ना। so it should also be 1, these all should be 1, ठीक है। so this should be my, like this is shifted by 1, so if I have previously picked 1 minus 1 like 0th element, fine। if I have previously picked so this should be starting from j is equals to 1 and I is equals to 0, right। for int I is equals to, कहाँ से था, this is my I ना, this is j, ऐसे ही रखते हैं, कोई नहीं। I should be, I is fixed, j is equals to 1 and j should be less than or equal to n j plus plus for int I is equals to 0 I must be less than n I plus plus, ठीक है। ओके, वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर, लाइक, ठीक है। अभी इफ आई एम एट like this position, if my j of minus 1, if I am picking that element, if my nums of j minus 1 is, it should be, it is previously picked, so it should, if it is greater than it, if it is smaller than nums of I, then we can obviously pick it, okay। so if I am currently here and I am currently here, okay, if I am
currently this value. Okay. So if it is smaller than this, then we can obviously pick it, right? And if we are not picking it, then we can get this value. Okay. We have to take two values now. One is, this should be our pick, and choice 1 if I am not picking, and int is c2 is equals to int underscore min. C2 should be equals to 1 plus dp of, कौन से वाली वैल्यू चाहिए अभी मेरे को, लाइक इससे प्रीवियस वाली, if I have to pick it. Currently I am here. Okay, if I am here, this is my j and this is my I. Okay, try to ddp in my recent submission. Okay. Let me check. ओके, मैम से टी कोमा माइनस वन साइज ऑफ टी पर, ये तो ऊपर वाला हो गया. ओके, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ये हमने डीपी बनाई एन विद एन प्लस वन रोज एंड एन प्लस वन कॉलम्स. ओके, एवरीथिंग असाइंड एज 0 फॉर इंट आई शुड बी ग्रेटर देन j. Okay, so we are starting from I minus 1 only. Okay, j should be greater than or equal to minus 1. ये माइनस वन तक कैसे जा रहा है, मतलब prev is equals to minus 1 is also a valid state, बट वो माइनस वन पे जाएगा कैसे, मतलब ये माइनस वन वाला बताओगे आप. मतलब वैलिड स्टेट तो है वो, ठीक है, बट लाइक वो एक्सेस प्रे माइनस वन शुरू करें ना. ओके ओके, हमने यहाँ पे इसे ऐसे हैंडल कर लिया. ओके, ठीक है, राइट राइट, या राइट. ओके. जी इज इक्वल्स टू आई माइनस वन कोलन, कोलन क्या पढ़ रहा हूँ, जी इज इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है, अगर हमारा माइनस वन है तो भी ठीक है, वी हैवंट पिक्ड टिल नाउ एनीथिंग. ओके, और अगर वो छोटा है देन वी आर पिकिंग इट. ओके, ये प्लस वन, ठीक है, वन प्लस डी पी ऑफ फाइव, ठीक है, और वी आर नॉट पिकिंग इट. dp of I plus 1 j plus 1 as dp of I j plus 1. Here we are not picking that element. Okay, fine. हम dp of I to j की जगह dp I में स्टोर कर रहे हैं ताकि फिर जहाँ भी माइनस वन हो वहाँ ज़ीरो आ जाए. या शिफ्टेड बाय वन इंडेक्स, राइट. ठीक है. ठीक है, टू माइनस वन ये अपना स्टार्ट हुआ. अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है, अपना स्टार्ट हुआ 4 से, ठीक है, वहाँ तक जाएगा 4, 4 माइनस वन 3,
कि ठीक है, so this is my row and we will be like going like this j. Okay, we'll be moving from here to here. If my j gets so I will be picking the value from there only. ठीक है अभी भी थोड़ा सा है अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये वाली चीज़ ही सोच रहा था मैं कि हमें वो आई ही चाहिएगा दोनों, फॉर बोथ we have to pick the value from there only, right? If I am taking that element, if it is like valid for the longest increasing subsequence, then we have to pick this value, right? ठीक है। एक बारी मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेट, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए ये हटा देता हूँ। So if I have a DP like is equals to 6, if I am making DP with 6 comma 6 plus 1, okay, 6 6 plus 1, ठीक है। So,
स्टार्ट करना है बिकॉज आई एम चेकिंग फॉर द प्रीवियस एलिमेंट्स, राइट। 3 I want to, yes, I will pick the value from here. Okay, right. All the best, bhai. Really enjoyed the stream. You earned a sub. Thanks for subscribing, Ayush bhai. Nice to meet you. वैसे माइक कौन है मेरा? यस, ठीक है। नाइस टू मीट यू टू। Okay, if I am having this. So if I'm here, okay. If I am currently at 15 and here I am at 2. Here also I should be getting 1. Okay. But from where am I picking it? It is the main question. 0, 0. So there are two cases whether am I picking it or not. Okay. Here also it would be like this. And when I will be coming from here, I should be starting from 3. Okay, now I understood. महेश भाई ने सही बात बताई थी। थोड़ा सा तो ड्राई रहना है समझ लीजिए। थोड़ा थोड़ा ड्राई रहना है समझ लीजिए। if I am currently at int I is equals to n minus 1, okay, and I am going till here, okay. अभी भी प्रॉपर क्लियर नहीं है बट ठीक है जितना समझ आया। तो जो अपना j होगा वो हम स्टार्ट करेंगे i माइनस 1 से, क्योंकि हमें उससे पीछे वाले सारे एलिमेंट चेक करने जो कि स्मॉलर हैं उससे, अपने करंट i से। शायद सही भी हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता हूँ, कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी तो इतना ही, थोड़ा मेरे को आइडिया लगा। और देखते हैं, रुको। आई एम एक्चुअली ट्राइंग ड्राई रन so that I get the clear view of it. Okay, so 45 से one second.
Okay, so okay, okay. That's why it was -1 year. Hmm.
I plus 1 over I plus 1. Mm.
प्रॉपर वो नहीं आ पाता, प्रॉपर थिंकिंग। लाइक मेमोराइजेशन से तो मैं इजीली कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्टिंग फ्रॉम मेमोराइजेशन टू इट। लाइट आ जाएगी तो देख लियो, 10 मिनट बाद चले जाइयो। ओके। आ गई क्या? नहीं। क्योंकि पानी लगा हुआ है बोतल में। ओके ओके। हाँ, मेमोराइजेशन से पराठा खाएगा? मम्मी बना रही खा है या लेंगे, खाना बना खा रही है इस लेंगे, टाइम? खा लेंगे। ठीक है। मेमोराइजेशन से कन्वर्ट करना है तो इजी है, बट अगर ऐसे लाइक सोच के लिख रहा हूँ तो बीटी आ रही है। सो अभी तक जो मेरा डायल है, ओके। If anyone is new to the stream, do comment. पता नहीं वैसे कभी भी यूट्यूब का ग्लिच भी होता है, पता ही नहीं चलता भाई। हाँ हाँ हाँ। Still there is so much confusion to me. This prev should be +1, I guess. Yes. Obviously my answer would be at ये तो ठीक है, ये भी समझ आ गया कि लाइक अगर अपना करंट इंडेक्स हाई है, so we will be checking only for the previous elements. There is no sense of checking elements which are ahead of it. We have to only check elements that are before it. Okay. So at one point when our row would be equal to 0, okay, when we will be at the 0th row, so when I will be, if my row is 0, then I will be checking the elements which are before it. Okay, so due to which its value will go to the -1. Okay, 0 minus 1, it will go to the -1. So it is also handled here, it would get -1 plus 1, it will bring it to the 0. Shifting is also maintained easily here, right? right, that's right till now. अगर अपना -1 है, ओके, सो मेरे को लाइक इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ से हमने इसी को उठाया सीधा i+1, और ये i अगर ऐसे कन्वर्ट करना होता है तो इजीली हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइक प्रॉपरली उसे अगर समझ के लिखना हो ना, कि प्रॉपर टेबल अपने माइंड में इमेजिन हो पा रही है, उस टाइप से इसे लिखना थोड़ा मुश्किल है। एक बार ये वाली चीज़ समझ में आया ना कि हम वो वाली क्यों उठा रहे हैं। If I am trying to pick an element, okay, if I am currently at j is my at 2 and I is currently at 3, so if j is smaller than I, okay, okay, if it is smaller, right, if it is smaller, then what value should I take?
Why am I trying to take this? Confusing sheet. Hey, hey, जब तक ये समझ नहीं आएगा इससे आगे भी नहीं जाऊंगा वैसे मैं, ये बात भी है। ओके, इसका एक प्रॉपर डायग्राम ही थोड़ा आइडिया देगा। ले आई, रुक जा। हो गया आज का भाई, खाना खा लेते हैं। कौन है? कोई नहीं है अभी, तो कोई नहीं है। तेरे फ्रेंड्स? नहीं, खाना खा लेते हैं फिर स्टार्ट, या फिर अभी एंड ही कर देता हूँ। है नहीं कोई? अभी तो नहीं शायद, पता नहीं, ऐसे नहीं पता चलता। यूज मैं हाँ ऐसे नहीं लेके तुम उठा रहे हैं। जल्दी खा ले इसको। ठीक है ना, बैकएंड पढ़ेंगे अब। ओके, टाइम टू एंड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, है ना? ठीक है।